Good morning, my dear students. Welcome to the class again. Now let us start with the next chapter, that is fractions. Chapter number 4, fractions. Fractions आपने class 3 में भी पढ़ा है and class 4 also. But what is the meaning of a fraction? बेटा हमें जब काफ़ी सारी चीज़ों को suppose we have 10 toffees and we have to divide it among 5 people. तो हम क्या करते हैं 2 each दे देते हैं, ठीक है. When we have a number of objects और हमें उन्हें कुछ लोगों के बीच में डिवाइड करना होता है तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि जितने लोग होते हैं और जितने ऑब्जेक्ट, then we come to know कि कैसे डिवीजन होगा. But in case of dividing a whole thing to different people, suppose we talk about dividing a whole pizza. अगर हमने whole pizza को 4 to 5 people में डिवाइड करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? What we do? We make fractions of that pizza. आपने पिज़्ज़ा शॉप में पिज़्ज़ा ईट किया होगा ना, तो आप देखते हो कि पिज़्ज़ा के आपको फ्रैक्शंस कट करके दिए जाते हैं, ठीक है ना. सो फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है. फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा है. अगर सपोज वी हैव टू डिवाइड अ केक, बर्थडे पार्टी हो रही है घर में और हमें केक डिवाइड करना है. सो व्हाट वी डू, वी मेक डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ केक लाइक दिस. सपोज दिस इज आवर केक, ये हमारा केक है, दिस इज अ होल केक एंड वी हैव टू डिवाइड इट अमंग 4 to 5 पीपल. तो व्हाट वी डू, वी विल मेक डिफरेंट फ्रैक्शंस लाइक दिस. ये ऐसे हम फ्रैक्शंस बनाते हैं इनके कट करके, ठीक है ना. सो दिस इज कॉल्ड, this is how we make fractions. Clear? So students, I hope you are clear with the topic fractions. Basic आपको meaning clear होना चाहिए कि fractions actual में होता क्या है. So we are having different types of fractions. That is our fraction number को हम लिखते कैसे हैं? 2/3, 4/7, 6/7, 8/7 and so on. ये सारी हमारी फ्रैक्शंस होती हैं. और फ्रैक्शन में जो टॉप वाला नंबर होता है, दिस इज आवर न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड द डाउनवर्ड नंबर जो नीचे नंबर होता है, दैट इज आवर डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर. क्लियर? नाउ लेट अस कम अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड improper fraction. Proper fraction क्या होती है हमारी? A fraction having the numerator less than the denominator. That is called the proper fraction. For example, proper fraction. What is proper fraction? Proper fraction is a fraction in which numerator which represent n. n से हम न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं. न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. फॉर एग्जांपल 2/7, 3/7, 4/9. दीज आर द प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि इनमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है. नेक्स्ट इज आवर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें हमारा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर जो है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, दैट इज 12/8, 15/7. न्यूमरेटर बड़ा है ना दोनों में. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. उसके बाद हम करते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? लाइक फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है सबका. फॉर एग्जांपल 1/7, 2/7, 13/7, 14/7. मतलब जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होगा, जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक होती हैं. नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की होती हैं. क्लियर? So students, you have understood about this. Next we will start with the comparing and ordering of the fractions through smart board. So look at here.
have already studied about fractions. Let's recall how to represent fractions on a rectangular strip of paper with the help of an activity. Ooh. Hello, you bright young minds. How are you? Let me explain how to represent fractions: half, 1/3, 1/4, 1/5, etc. by paper folding using rectangular strips of paper. Ooh. Take 3 strips of paper. Take pencil colors. Mark the strips as A, B and C. Fold the strip A from the middle so that the 2 parts overlap each other. Unfold the strip. Shade one part of the strip with the colored pencil. Since out of 2 parts we shaded only one, each part represents half or 1/2 of the whole strip. Let's record our observation in the observation table. Each part of the strip A represents half or 1/2 of the whole strip. Fold the strip B in 3 equal parts. Unfold the strip. Shade any one part with the colored pencil. Since only one part out of 3 has been shaded, hence the shaded portion is the 1/3 part of the whole. Let's record our observation in the observation table. Each part of the strip B represents 1/3 of the whole strip. Fold the strip C in 4 equal parts by folding the strip twice. Shade any one part with a colored pencil. Since we shaded one part out of 4, hence the shaded portion is the 1/4 part of the whole. Let's record our observation in the observation table. Each part of the strip C represents 1/4 of the whole strip. We'll meet again. Bye. We have learned that half is a bigger number when compared to 1/4. Let us observe the pictorial representations of these fractions. Half, 1/3, 1/4. Note that they have the same numerator. It is easily observable that half is the greatest fraction among the 3 and 1/4 is the smallest fraction. When the numerator of the fractions to be compared are same, the fraction with the bigger denominator is always smaller. So 1/4 is smaller than 1/3 and 1/3 is smaller than half.
consider these fractions 1 6, 5 6. These two are like fractions. Since the denominators of these fractions are same, 1 6 represents 1 out of 6 parts. 5 6 represents 5 out of 6 parts. Which number would be greater? The fraction representing 5 out of 6 parts is greater. We can also look at these fractions as scores. Which of these scores is a better or a greater score? 10/15 or 13/15? 13 out of 15 is a better score. So, 13/15 is a bigger fraction. Thus, when the denominators are same, that is, when the fractions are like fractions, the fraction with a greater numerator is always greater. So students, I hope you have understood to how to compare the like fractions when the denominators are same. तो उसमें क्या करना है, आपने सिर्फ न्यूमरेटर्स को देखना है, चेक करना है which is greater one and you will find which is the greatest one just by comparing the numerators. So for the comparison of unlike fractions, we will